अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बताएंगे किसी भी रोटेट मोबाइल में बैंकिंग एप्लीकेशन को किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। पहले हम आपको तमाम बैंकिंग एप्लीकेशन चला के दिखा देंगे, उसके बाद आपको इसका प्रोसीजर समझा देंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इस एप्लीकेशन को अपने रोटेट मोबाइल पर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम वीडियोस को बारी बारी आपको चला के चेक करवा देते हैं कि रोटेट मोबाइल में बैंकिंग एप्लीकेशन वर्क नहीं करती जब तक आप उसकी मैनुअली सेटिंग नहीं कर देते मैजिक्स के ज़रिए। तमाम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इनकी आपने कैशे और स्टोरेज क्लियर करवानी है। स्टोरेज क्लियर करवाने के बाद जो प्रोसीजर वीडियो में आपको दिखाया जाएगा वो सेम स्टेप बाय स्टेप आपने वही करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपने फ़ोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करने के बाद उसमें कुछ आपको एपीके और मॉड्यूल मिलेंगे। आपने मॉड्यूल को मैजिक्स की सेटिंग में जाके इंस्टॉल कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। जिस मॉड्यूल की अपडेट आई होगी आपने उसको अपडेट लाजमी करना है। अपडेट करने के बाद या मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद आपने मोबाइल को एक दफ़ा रीबूट लाजमी करवाना है।
लास्ट वीडियो में मेरे बहुत से भाइयों ने कहा था कि आपका ये प्रोसीजर करने से मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको ये भी चेक करवा दिया कि इससे हमारे रूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मज़ीद इस किस्म की वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और किसी किस्म के मसले के लिए कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको हल किया जाएगा।